Okay, hi everyone. Let's start with today's session. Just let me know if my screen is visible and I am clearly audible. Okay, done. So in today's session, we'll be going through pointers and strings. There are a couple of concepts that we'll be going through within pointers and strings. And first, we'll start with pointers. And before knowing pointers, you need to be very good at two concepts, which is pass by value and pass by reference. And to understand pass by value and pass by reference, I'll also refresh you about arrays. And let's understand what is pass by value first. Pass by value is nothing but you call a function and pass a variable. When you pass that variable, it actually copies the value of that variable. That variable is not sent to the function. That particular variable that was defined in the main function won't be sent to a outer function. It will be copied. A copy will be made, and that copy will be sent to the outer function. Function receives a copy of the variable. And let me take you through an example so that you may understand it better. So this is the main function. Okay, first let me know if my VS Code was visible. Was my VS Code visible? We'll look into sorting at last. We'll make sure that we cover up all the concepts that were assigned for today, and we'll look into sorting after those concepts are covered. Is that fine? Yes. Okay. Let's move ahead. Okay. So what we're talking about? Pass by value and pass by reference. So this is the main function first. This is the main function, and this is the outer function that performs some operation, and we'll look into that uh, when we are understanding going through this main function. So first main function, we have a variable 5, and we are just printing out to see what's the value of variable 5. Okay. Uh, First, let me just execute and show you what's the value of 5 now. Original value is equal to 5. And now we'll actually call this function. Okay. Now, at first, let's call this function. And to that function, we are passing a value, which is x, and x value is 5. So when we pass this x, this literal x variable is not being passed here. X is being copied, means only the value 5 is being copied and sent to the function. Which function? Increment by value. And what does increment by value does? It performs some action. So it receives that x and it renames it as variable num. Okay. Then to that variable we are adding 10 and printing that number. And let's check, when we pass the value x to this function and print the value by adding 10, which variable was changed? Is that variable x or is that variable number? So let's check. The original value was the same. The value that was changed was the variable within the outer function. That means the original variable wasn't changed. Only the copy which was sent to the outer function was changed and printed out within the function. Let's also print the original value and original address, the variable x and the address of x. So this AND operator here basically tells the compiler to calculate the address of x.
So let me just remove sorry, address for now. That will add up to the complexity. We'll understand and operator and address later in the session. For now, I just want you to understand that when you pass x, variable x, it creates the copy of that variable and send to the outer function, and there the copy is changed. That copy is added with 10, and that copy is printed here, and that copy is named as stored in another variable named num. And when you execute this program, the original value was 5, x is equal to 5. Num was actually incremented 5 plus 10. The value was passed and 10 was added to it. This is the variable within the function. And the value that was defined in the main function, the original value, which was x, is the same. It was not changed. I hope that is clear. Uh, just give me some input so that I can move ahead. Okay, done. Now let's understand what does it mean by pass by reference. Pass by reference actually passes the address of that variable, and we'll also understand this in deep when we learn about pointers. So when you pass this variable, the copy is not created. Actually, the address of the original variable is passed to that function. And let me explain you with another function here. Let's remove the first function. This is another function which takes the address of point variable, and actually will pass address of. Now when you see, we are actually passing pass by reference. We are referencing the variable x and passing that to the function. Then that function increments that value. And here the value is not just a copy of that variable. It is actually changing the variable itself. It is actually changing the x because we passed it with reference to x. This AND operator says the compiler that to calculate the address of x. And when it calculates the address of x, this address of x is passed to the function. Now it receives that function, receives that address, and this star operator basically says the compiler to go to that address and get the value. And here we are actually getting hold of that variable. Basically, this star num is getting hold of the original variable because we passed its address to the function. And now because we passed the address to the function is getting hold of that original variable with star operator. This is known as dereferencing. Dereferencing means you get that address, you go to that address and check the value, check the variable itself. And now because the function got hold of the variable, it is incrementing it by 10, not just a copy of that value or copy of that variable. It is incrementing 10 to the original variable itself. So when I just print here the original value, this value will be changed to 15. This won't be 5 anymore because the function actually changed the original value. As you can see, the original value was 5 before. Now, after passing the address to the function, it incremented it by 10. Now, because the original variable was changed, the x variable was incremented by 10 and is 15 now. I think pass by reference was also clear. Just give me some inputs.
Could you explain what function the asterisk and ampersand do? Yeah, we'll get into that while we are learning pointers. I just want you to get the hold of these concepts so that you can understand pointers concept very well. ये ampersand and asterisk pointers में अच्छी तरीके से समझाता हूँ मैं. Done. So moving ahead, arrays refresh करूँ या फिर all of you are good with arrays? Okay, I think okay. Uh, Let me take you through arrays very quickly because some of you are asking to go through it. Basically, arrays stores collection of values in these flower brackets, and you can actually access each element of array using this square brackets and the index number. So when you क्या बोलते implement for loop, it will print out all the elements of array because you are accessing each element of array using square brackets and printing out each element. Let's just remove this function again. Yes, by accessing each element using array name and square brackets with index number, you get each element printed out here. Okay, I think we are good with arrays. We'll jump on to pointers now. Okay, let's go. Pointers. Pointers is the most interesting topic you will ever come across in programming. So थोड़ा इधर उधर I wouldn't say it's complex. Agar you got hold of basic fundamentals, you will be able to understand it very easily. So let's jump on to pointers. So what are pointers first of all? Pointers, trust me, is just a basic variable. Again, pointers are just variables that store memory address of another variable instead of storing any other values like characters, strings, numbers. It does not store all of that. It just stores the memory address. So again, pointer is just a variable that stores memory address. Memory address of what? Memory address of another variable. And let's look at this code snippet. We have a normal variable x which stores the value 10. And coming down in the same code snippet, we have a variable pointer. This p is just normal variable, and when you put a asterisk before a variable, this can be any name, p, s, t, कुछ भी name रह सकता है ये p. But when once you put a asterisk before the name, it tells the compiler that this variable, this specific variable, is a pointer variable. What this asterisk do? This tells the compiler that this is a pointer variable. And what do you store in a pointer variable? Again, pointer variable stores the memory address of another variable. In our case, when you use ampersand, it tells the compiler to calculate the memory address of whatever variable you set here. In our case, it calculates the memory address of x. So once it calculates the memory address of x, this memory address is directly being stored in this variable. So when you print just p, it will actually print out the value it stores, which is memory address of x. So here you can understand it better visually. So for example, x stores 10 and is at address 1000. Now pointer variable stores the address of x, which is 1000, and pointer variable itself is stored at some address, let's say 2000. Let me take you through an example. Okay, again,
there is a variable x which stores the value to 25. There is a pointer variable. This asterisk tells the compiler that it's a pointer variable, and this ampersand tells the compiler to calculate the address of this variable x. So let's go one by one. What happens when you print x? It just print the value of x. And what happens when you print the ampersand x? As I said, key this ampersand tells the compiler to calculate the memory address of x. Then it prints the memory address of x. Memory address of x in our case is 0x7 ffff d5 2c. This is the memory address of x. And when you actually check what is being stored in p is a pointer variable here. P is a pointer variable that stores the memory address of x. And when you print p, the value of x is 25, the address of x is this, and the value being stored in p is also same as the address of x. I think this is very, very clear now that pointer variable just stores the address of other variable. And what happens when you actually print asterisk p? So this asterisk p and this asterisk p behaves differently because it depends on the situation. When you are initializing the pointer variable, the compiler, this tells the compiler that this is a pointer variable. So initialize this variable as pointer variable. But when you actually print it or use it in operations, this asterisk actually tells the compiler to go to first to check the value being stored in pointer variable. What is being stored in pointer variable? The address of x. It checks that. Then it goes to that address and get hold of that variable. As I said before in the क्या बोलते हैं, array function reference by pass by reference में समझाया ना, it get holds of that particular original variable. In our case, because p is storing the address of x, this asterisk tells the compiler to check the value being stored in pointer variable, which is the address of x. Then it goes to that address, then get hold of that memory block. So when you do this, when you print asterisk p, it will actually print the value of original variable because it got hold of original variable. Now the value of x is also 25, and when you do asterisk p, it goes to that address, get hold of that original variable, and get the value stored in that original variable x, which is also 25. So asterisk p helps you to dereferencing. This is known as dereferencing. Basically, you dereference to that memory address and get the value of original variable whose address is being stored in the pointer. Clear? Hai? Okay, so in call by value, the initial value does not change, whereas call by reference changes the initial value. Yes, exactly, Ahad. बिकॉज कॉल बाय वैल्यू में वो वेरिएबल का वैल्यू कॉपी हो जा रहा, मतलब एक सेपरेट कॉपी सेंड हो रहा फंक्शन को. बट वेयर एज इन पास बाय रेफरेंस it is being referenced to the original variable. That's the reason whenever we perform any operation, when a value is being passed by reference, the actual original variable will be changed. Okay, let's proceed. Now, the second topic we have is pointer variables. Pointer variables तो समझ गए होंगे. Pointer expressions. Basically, this is the expression. क्या बोलते? Pointer expressions means the expression that includes any क्या बोलते pointer related variables or symbols, operators. Here pointer expression में अपन क्या क्या है? X है, and है, and x है, p है, asterisk p है,
and we can also get the address of pointer. Basically expression includes whatever we are defining here, क्या जो भी है x and person x asterisk p. This includes in pointer expression. These all are included in pointer expression. And what are L values? Wait. So pointer expression में ये सब included रहते. X में value stored हो रही है variable की. Sorry, x is a variable in which the original value is stored. This ampersand x gives the address of variable and address stored in pointer. Okay, asterisk p get hold of that original variable and get us the value. And percent p again, what did I say कि and percent क्या करता? And percent tells the compiler to calculate the address of any variable which is being used with it. So here we are using p instead of x. So it tells the compiler to calculate the address of pointer itself. So it gets the address of pointer. And let's understand what are L values and R values. L values L values just basically means values being written at the left side, and R value means values being written at the right side. And what is the difference between them? L values usually refer to a memory location, any variable uh, which has a memory location within which any other value can be stored. For example, here at the left side we have x. Because x has a memory location, we can actually check it with ampersand a, that it is stored in some memory location. It has a memory address. X has a memory location, and that's the reason it is considered as left value, because there can be some values be stored in this memory location. And in our case we are storing 10. And on the other hand, we have right values. And here we have 10. 10 does not have any memory location. It's just a value. You cannot store anything like, for example, a character or another integer within 10, because it does not have a memory location. It is not store, it is uh क्या बोलते हैं? Yeah, it does not persist a memory address. इसका कोई memory address नहीं है, सिर्फ एक value है ये. Whereas x actually have a memory address and is at a memory location. So basically, let's also understand this कि जब भी we are assigning values, the data flow is from right to left. यहाँ पर 10x को जा रहा, मतलब data flow is from right to left. Here, even here, या memory address calculate हो रहा, and then the memory address is being stored in pointer variable. The data flow is always from right to left. So why do we want left values to have memory location? Because data flows from right to left, so there has to be some location, there has to be some memory address in which you can assign values to which the data can be flowed to. Here 10 is being stored in x, so data is being uh, uh, assigned to x, so data is flowing from right to left. Okay, was that clear? Yes. Okay. Let's also, and yeah, and also even I had a dot in this. I also want to explain that to you. Key, when you use pointer variable, you are actually storing and क्या बोलते address of x here, but we can't use this. We can't use. We can't assign anything to ampersand x. This is wrong, because as I said कि ये कोई actual variable नहीं है.
This tells the compiler to calculate the memory address. तो खाली एक कैलकुलेशन, एक वैल्यू, जैसा 10 है यहाँ पर, खाली एक वैल्यू है ये, जो एक मेमोरी एड्रेस है. तो यू कांट एक्चुअली असाइन एनी अदर वैल्यू टू दैट. क्या बोलते, जस्ट अ वैल्यू. खाली एक वैल्यू देता उन्हें, मेमोरी एड्रेस का जो नंबर रहता, खाली वो नंबर देता. That is not specifically, that does not have any specific memory location. उसको एक मेमोरी स्पेस नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे. कैलकुलेशन करके उन्हें एक वैल्यू दे रहा, खत्म, उतना ही. खाली एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा एड्रेस की, खत्म. इट डज नॉट हैव अ मेमोरी स्पेस, इसलिए ये यूज नहीं कर सकते लेफ्ट साइड पे. ओके, लेट्स आल्सो एग्जीक्यूट दिस एंड चेक क्या क्या प्रिंट हो रहा. Okay, value of x is 10. Address of x is this. Pointer stores the address of x with the address of x, and the pointer value is same. Value pointed by pointer is 10 because it is pointing towards x and x has value 10. And address of p, because p is also a variable, it is stored in some memory location which is different from the memory location of x. Last में 4b0 है देखो. Yeah, and the last value, I'll also explain you this. As I said कि जब आप asterisk use करते हैं, यहाँ पे initialize नहीं हो रहा, यहाँ पे pointer initialize नहीं हो रहा, pointer is being assigned a value. And मैं जैसा बोला, ये asterisk क्या करता, it tells the compiler to check the memory location. मेमोरी लोकेशन कौन सा है, x का मेमोरी लोकेशन है पॉइंटर में. देन इट गोज टू दैट मेमोरी एड्रेस, गेट होल्ड ऑफ दैट वेरिएबल, गेट होल्ड ऑफ दैट वैल्यू. तो यहाँ पर एक्चुअली x रिफरेंस हो रहा. तो व्हेन यू असाइन सम वैल्यू, दिस वैल्यू इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड इन x बिकॉज asterisk क्या करा, it got hold of that original variable. And when you print the value of x, then यहाँ पर लास्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा ना x, इट एक्चुअली प्रिंट्स 50 बिकॉज अपन यहाँ पर पॉइंटर की हेल्प से रेफरेंस करके we changed the value of x to 50. It was 10 before and now it is 50 now. Clear है? No, pointer is a variable. उसके अंदर मेमोरी एड्रेस असाइन, मेमोरी एड्रेस की वैल्यू स्टोर होती. Okay, not the pointer, the doubt you had. या वो एड्रेस भी नहीं है. मतलब कैसा बोलूं, इट्स जस्ट अ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस. मतलब खाली ये एक नंबर है. वो मैं एड्रेस बोलूंगा तो आप लोग सही में मेमोरी लोकेशन है समझेंगे, इसलिए आई एम जस्ट सेइंग कि वो एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा. इट्स जस्ट अ वैल्यू. तो जब उन्हें कैलकुलेट करता, सो उन्हें सिर्फ बेसिकली एक वैल्यू देता विच इज बीइंग स्टोर्ड इन पॉइंटर. वो एक्चुअली एक मेमोरी लोकेशन नहीं दे, मेमोरी लोकेशन नहीं है, स्पेस नहीं है. वो वो मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही, देन दैट वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन पॉइंटर. फिर जब अपन एक्सेस करते पॉइंटर को, उन्हें चेक करता है उसके पॉइंटर में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू लेता उन्हें, देन दैट वैल्यू पॉइंट्स टू सम एड्रेस. ठीक है. So like inside x there is star p which helps in pointing the address, which is, so inside x there is helps in pointing the address.
shows address. Uh, no, like we assign some value, helps in pointing the address right. Yes, yes. जब asterisk p यूज करते हैं अपन operations में, it just checks the address value within itself, pointer के अंदर जो address value है, then वो compiler वो value के address पे जाता. देखो यहाँ पर x का एड्रेस क्या है, दिस इज एड्रेस ऑफ x. मतलब बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स जो रहते हैं उसको, हर एक मेमोरी ब्लॉक को एक वैल्यू वो रहती, असाइन रहती, वैल्यू नहीं, नेम समझ लो, या फिर यहाँ पर उसका रेफरेंस करने के लिए एक वैल्यू असाइन होती मेमोरी ब्लॉक को, लाइक फॉर वन ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक. बट यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर यूज करके अपन मेमोरी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते, ये मेमोरी ब्लॉक है, देन द पॉइंटर वेरिएबल इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी ब्लॉक वैसा, एंड दिस वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन पॉइंटर. फिर पॉइंटर को जब जब अपन एक्सेस करते, उन्हें ये उसके अंदर ये वैल्यू रहती, ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रहती. देन व्हाट सीपीयू डज इज, उन्हें ये अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस पे जाता, ये लेता, ये कौन सा मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है देखता, वो मेमोरी ब्लॉक को जाता, एंड इन आवर केस दैट मेमोरी ब्लॉक is variable x, then it get holds of that variable, and we can perform operations referencing to that original variable. And the address is, हाँ, and person just calculates the address. उन्हें खाली सीपीयू को बोलता मेरे को x कहाँ पे है, x कौन से मेमोरी ब्लॉक पे है, उसका वो आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ करेक्ट वर्ड, आइडेंटिफिकेशन नंबर. दिस इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन नंबर मेमोरी ब्लॉक, हर मेमोरी ब्लॉक का वैसा. तो एंड पर्सन एक्स कैलकुलेट्स द आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट टेल्स सीपीयू टू कैलकुलेट द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वेरिएबल. उतना ही. Let's move on to the third topic if you are okay with it. Okay, let's move on. Our third topic is, यहाँ पे अगर आप लोग क्लियर हो गए, then everything after this is very very easy for you to understand. Pointer and functions. देखो स्टार्टिंग में मैं बोला था कि जब अपन वैल्यूज पास करते फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट कॉपी क्रिएट होता, ठीक है. बट इफ यू वांट टू पास इट थ्रू रेफरेंस, वी नीड टू यूज एंड परसेंट. बट बाय डिफॉल्ट क्या होता, सी पासेस आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू से पास होता. यूजिंग पॉइंटर्स अलाउज पासिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट में समझाया था ना, क्या बोलते हैं पास बाय रेफरेंस में, कि इफ यू वांट टू पास इट बाय रेफरेंस, you need to use pointers to pass the address of that variable so that you can make changes to the original variable. This enables a function to modify the original variable. And again, to pass the variable's address, we use ampersand. Ampersand again calculates the address, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर कैलकुलेट करता, देन इट सेंड्स दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू फंक्शन. एंड दिस क्या बोलते फंक्शन, एग्जाम्पल भी समझा, तो देन द फंक्शन रिसीव्स दैट वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल कैसा रिसीव होता, एज आई सेड कि आप जब एस्टेरिस्क यूज करते, other than when initializing, जब asterisk p यूज करते, it actually references the original variable, and function में क्या होता, it receives as a pointer parameter, and
मॉडिफाई भी अपन ये कैरेक्टर यूज करते, एस्टरिस्क कैरेक्टर यूज कर सकते टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल, क्योंकि अपन एस्टरिस्क जब यूज करते इट एक्चुअली पॉइंट्स टू द ओरिजिनल वेरिएबल। यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझेंगे। नाउ वी हैव नॉर्मल वेरिएबल num which is assigned the value 20. Here it is being printed out at first so that we can check the value before and after. We are calling a function. Here we are not just passing num, we are actually passing and num, which calculates the identification number of this variable and pass it to this function. And what function does is, उन्हें क्या करता, वो एड्रेस पास होता ना, it gets that address into a pointer variable. अपन जैसा यहाँ पर int star p is equals to and num कर रहे थे, इन्हें क्या कर रहा था, ये कैलकुलेट करके आइडेंटिफिकेशन नंबर p पॉइंटर में स्टोर कर रहा था जब यू यूज एस्टरिस्क व्हेन इनिशियलाइजिंग। यहाँ पर क्या हो रहा, द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। जब आप and num पास कर रहे, दिस is calculating the identification number of variable num and assigning it to this pointer variable, which is one of the arguments of this function. So basically ये pointer variable में क्या store हो गया अब, the address of num, the identification number of num. And now because this has the identification number of the original variable, जब आप reference करते, now it is not being initialized, तो ये asterisk क्या करता, tells the compiler to look into that pointer variable कि कौन सा एड्रेस है। now we have the address of x, इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये पॉइंटर में, तो it looks into that address, goes to that address and assign value of 100 to that original variable. Now this asterisk p is actually referencing to original variable. Original variable क्या है, जिसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर है, कौन सा एड्रेस स्टोर है इसके अंदर, and of num, ठीक है, and of num की वैल्यू ये वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल स्टोर है, एंड व्हेन यू रेफरेंस इट, तो ओरिजिनल वेरिएबल रेफरेंस हो रहा है यहाँ पर, तो व्हेन यू असाइन 100 to this, 100 is actually being assigned to num. We'll actually check it by executing. So before function call, the value of x was 20. Sorry, value of num. See, यहाँ पर num print कर रहे, then after function यहाँ call हो रहा, फिर print हो रहा num, then after function call the value of num is 100. This was pointers using with functions. कुछ भी डाउट है, इज आइडेंटिफिकेशन नंबर एड्रेस, यस बेसिकली यस वही है, मैं खाली कंफ्यूज ना हो ना बोल के बोल रहा हूँ। एड्रेस आइडेंटिफिकेशन नंबर वही हाउस नंबर, हाउस आइडेंटिफिकेशन नंबर, एड्रेस वही रिफर करते ना, 12-1- ऐसा। So can I move ahead to the next topic? Do anyone have doubts related to these pointers? Like, are you getting confused here? Okay. Moving on to the next topic, pointers to pointers. यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत रहती, so be active. Pointers to pointers basically means we are creating a pointer which points to another pointer. So double pointer भी बोलते, a pointer that stores the address of another pointer.
एज इज प्रीवियसली सेट की पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, उन्हें भी एक एड्रेस पे स्टोर हो रहा. देन देर इज अनदर पॉइंटर, पॉइंटर टू, दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वन. दैट्स इट. यूज व्हेन अ फंक्शन मस्ट मॉडिफाई पॉइंटर इटसेल्फ. अपन यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे थे, अपन एक्स की ये ओरिजिनल वेरिएबल चेंज कर रहे थे यूजिंग पॉइंटर. बट व्हाट इफ यू वांट टू change the pointer itself? So you have to initialize another pointer, pointer 2, referencing pointer 1 to change pointer 1. यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल चेंज कर रहे थे by initializing a pointer to it. Now we'll change pointer 1 by initializing a pointer 2. Okay. We can actually यहाँ इससे समझाता हूँ मैं. Now we have our normal variable x storing value 10. Then we have a second variable which is a pointer variable. कैसा मालूम हो रहा? Because when initializing, when you use asterisk, it tells the compiler that this particular variable is a pointer variable. Now this pointer variable stores the value of stores the address of x. Here third में क्या हो रहा? We are initializing a double pointer. डबल पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा? डबल पॉइंटर कैसा इनिशियलाइज करते? पहली बात टू एस्टेरिस्क यूज करते, P2. तो P2 जब आप इनिशियलाइज करते, सॉरी, डबल पॉइंटर जब आप इनिशियलाइज करते, यू यूज टू एस्टेरिस्क. इन्हें सिर्फ पॉइंटर वन को रेफरेंस नहीं कर रहा, you can actually dereference it to original variable. That's the reason we are using two asterisk here. वो एग्जांपल के साथ अच्छा समझेंगे अपन. पहले जस्ट लुक इनटू दिस स्निपेट्स कि यहाँ पे हो रहा क्या. P1 का एड्रेस पॉइंटर 2 में स्टोर हो जा रहा, ओरिजिनल का एड्रेस P1 में स्टोर हो जा रहा. खत्म. यहाँ पर और अच्छे से समझने आता है. X is storing 10 at address 1000. ठीक है. P1 is storing 1000 because it is the address of X. Now P1 is actually being stored at 2000 and that address is being stored in second pointer. And second pointer is also being stored at some memory address, 3000 let's say. Example के साथ समझेंगे, which was fourth one. So, okay, पहले ये समझेंगे. यहाँ पर जब अपन एक्स प्रिंट कर रहे हैं, नॉर्मल एक्स की वैल्यू प्रिंट होती 10. देन व्हेन यू प्रिंट p asterisk p1, ये तो मालूम अपने को, इन्हें भी डायरेक्टली x की वैल्यू प्रिंट करता बिकॉज इट इज डीरेफरेंसिंग. लुकिंग इनटू इट, कौन सा एड्रेस है देखता, वो एड्रेस को जाता, वो एड्रेस में कौन सा वैल्यू है देखता, देन इट गेट होल्ड ऑफ दैट वैल्यू एंड यहाँ पे वो प्रिंट हो रहा. तो बेसिकली x प्रिंट हो रहा है यहाँ पर. And let's all first execute this before understanding the third line. Okay, so first में भी 10 प्रिंट हो रहा है x की वैल्यू, सेकंड में भी 10 प्रिंट हो रहा है x की वैल्यू, थर्ड में भी x की वैल्यू ही प्रिंट हो रही. क्यों? जब आप टू एस्टेरिस्क यूज करते, उन्हें डबल रिफरेंसिंग हो रही है यहाँ पे. इट चेक्स व्हाट वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन द पॉइंटर 2. तो पॉइंटर 1 का एड्रेस स्टोर होके है, बट बिकॉज वी आर यूजिंग टू एस्टेरिस्क हियर, उन्हें क्या करता और डीप जाता, उन्हें फिर पॉइंटर वन के वेरिएबल में चेक करता कि कोसा मेमोरी एड्रेस है. देन इट गोज टू दैट एड्रेस. बिकॉज वी आर यूजिंग टू एस्टेरिस्क, 2 लेवल डीप जाता है. यहाँ पे 1 लेवल डीप जा रहा था, यहाँ पर 2 लेवल डीप जाता. एंड जब इन्हें टू सेकेंड लेवल डीप जाता, इट गेट्स द वैल्यू ऑफ x. थोड़ा कुछ समझ में आया? डबल पॉइंटर्स. ओके, गॉट इट. Let's also perform some operations using double pointers. So यहाँ ये तो क्लियर है.
सो या सो एज ए सेड कि जब आप डबल एस्टेरिस्क यूज करें उन्हें टू लेवल डीप जाके चेक कर रहा कौन सा वेरिएबल है, सो क्या वैल्यू है, सो तो यहाँ पर जब सेकंड लेवल पे जा रहा है इन्हें, तो इट गेट होल्ड ऑफ दैट ओरिजिनल वेरिएबल एक्स, then it assigns 50 to that original variable. Now the value of x will be not 10 but 50. यहाँ पे x की वैल्यू फिर से 50 हो गई, एंड पॉइंटर व्हेन x को रिफरेंस कर रहा था इसलिए उसकी भी वैल्यू 50 है, मतलब x को ही रिफरेंस कर रहा है, x की वैल्यू ही 50 है. Okay, so I think this is also clear. Let's move on to the next topic, which is array and pointers. Like every concept is almost similar, but थोड़ा बहुत difference है. So arrays को pointers की जरूरत ही नहीं रहती इनिशियलाइज करने की. पहली बात, arrays already are passed by reference. अपन इंटीजर जब पास कर रहे थे, if we wanted to change the original variable, we had to actually pass the address of original variable so that we can modify the original variable. But arrays में क्या रहता, अपने को जरूरत ही नहीं रहती कैलकुलेट करने की एड्रेस. इट बाय इट्स मतलब inherently passes the value of array by reference. और जब आप वो वैल्यू मॉडिफाई करते इन आउटर फंक्शन, यू एक्चुअली चेंज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल array. तो एंड पर्सन यूज करने की जरूरत ही नहीं रहती वहां पर. अरे नेम एक्ट्स एज ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट. जब आप अरे पास करते यहाँ पर अरे एंड पॉइंटर्स, अरे ये सिंपल कैसे हो गया इतना. वेट, जस्ट अ मिनट. Okay. What we'll do is we'll first write a function. Just give me a minute. We'll write a function. अच्छा समझ नहीं आता. Update array. Just give me a minute. Let me write the function. Okay, done. Yeah. So, let me execute and also show you. So basically, जब अपन वैल्यू पास कर रहे थे, we had to put and % here. बट अरेज में जरूरत नहीं रहती क्योंकि अरेज इनहेरेंटली आर पास्ड बाय रेफरेंस. जब आप अरे पास करते हियर इन द फर्स्ट लाइन,
array name acts as a pointer to the first element. मतलब जब आप array का name pass करते, it acts as a pointer to the first element. तो जब आप प्रिंट करते वो वैल्यू अरे का एलिमेंट, यू कैन जस्ट use asterisk and array. Because we are looping through every element, we are also incrementing it by one, or yeah, incrementing it by one every time so that we print all the values. Let's just say कि अपन एक सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पर. ये फॉलो हटा देंगे यहाँ से. वेट. या तो जब आप अरे अरे के नेम से पास करते, वी हैव एन अरे with the name arr. When you pass directly to that function, we are not using ampersands, so we are just passing the name of the array, and when you pass the name of the array, it points to the very first element of that array. So you can just do uh, name of the array and asterisk, and it will print out the first element, the very first element जो 10 है. फिर से execute. Okay. Why is it giving some garbage values? Okay, sorry. Oh, we are good to go now. Yeah. तो बेसिकली उन्हें 10 पास करा क्योंकि the first element of array is 10. And what if you wanna access uh, all the elements? तो पूरे elements को access करने के लिए you just increment क्या बोलते the pointer by 1 so that it prints each and every element. उन्हें इंक्रीमेंट करते रहता. क्यों? क्योंकि अरे कंटिजियस फॉर्म में स्टोर होता. फॉर एग्जांपल, इफ द एलिमेंट ऑफ array, first element of array is stored at 5, the next will be stored at 6, then 7, then 8. कंटिजियस मैनर में स्टोर होता. इसीलिए फॉर दैट रीजन अगर अपन खाली इंक्रीमेंट करते गए, विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू. तो यहाँ पर एलिमेंट 0 is 10, then 1 is 20, 2 is 30, 3 is 40. And let me actually change the values so that we understand it better. Yeah, let's increment it, increment every element by 5. तो जब आप इंक्रीमेंट करते, बिकॉज यहाँ पर वी आर इम्प्लीमेंटिंग पाथ बाय रेफरेंस, तो एक्चुअल अरे चेंज होता एंड वी आर प्रिंटिंग आउट द अरे अगेन हियर. तो यहाँ पर जो वैल्यूज रहते चेंज हो जाते. यहाँ पर पहले 10, 20, 30, 40 है ना. आफ्टर इंक्रीमेंटिंग ईच एलिमेंट बाय 5 विल गेट 15, 25, 35 and 45. Do we have any doubts in this arrays and pointers? No. Okay. Sixth one, moving on to the sixth topic. Arrays passed to function. I think this is the same concept, access. Yeah, this is the same concept. वो कोड में ही मैं ये भी समझा दिया, but
डिफॉल्ट। तो ये वही है कि आई एम पासिंग अरे टू अ फंक्शन। यहाँ पर अरे का नेम पास हो रहा एंड दिस इज रेफरेंसिंग टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। एंड व्हेन यू प्रिंट फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट आई जीरो है तो बेसिकली यही फर्स्ट टाइम खाली एस्टरिस्क पी प्रिंट हो रहा। देन इंक्रीमेंट हो गए, फिर आई वन हो रहा। देन वो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा, बिकॉज एज ए सेड कि एरे के एलिमेंट्स कंटीजियस मैनर में स्टोर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो एक वही प्रिंट हो रहा, वही है। हाँ या 10 20 30 40 50 यहाँ पर प्रिंट हो रहा आउटर फंक्शन में। Let's move on to the next topic, array of pointers. And so this is also very simple. इसमें सिर्फ क्या है, array instead of storing normal values, we are storing pointers. Array of pointers, पूरे elements pointers है. Each element is a pointer, and that each element store addresses, not actual values. You can actually access the क्या बोलते variable that each element is pointing towards by using int array का element. This refers to particular array element, and asterisk gives you the value it is pointing towards. And each element in array can point to a different variable, क्योंकि they all are different variables, different pointer variables. When you want to get address of each element, you use this particular element, क्योंकि ये pointer है. Every element in the array is pointer, and when you access the value of that pointer, you get the address that it stores of some other like normal variable. And when you use asterisk, it gets you the value of the variable whose address is being stored in the pointer variable. Let me take you through an example again. क्या था उसका टॉपिक का नाम? array of pointers. Okay, yeah, array of pointers. Okay, so at first we are initializing three variables which will be later on stored in the array. So we are initializing an array. Again, when initializing, as I said, कि जब आप asterisk use करते when initializing, so it tells the compiler that this particular variable, in our case it is an array, this tells the compiler that this is a pointer. जब आप asterisk use करते while initializing, जब आप अगर asterisk use नहीं करें, then it will be just a normal variable, normal array. Because you are using asterisk, it tells the compiler that this particular array is a pointer array, which will store only pointers. दूसरे which will only store pointers. यहाँ पर first pointer element जो array of 0 है, at 0 index, first element में अपन address of A store कर रहे. Then the second element stores the address of B. Then the second element stores the address of C. And then when you access those elements using asterisk, जब आप asterisk operations perform करने के लिए use होते, what I said कि उन्हें पहले वो variable में देखता क्या value है. In our case, first element में क्या value है? The address of A. Then it goes to that address and check its value, and यहाँ पर use कर सकते हैं वो value. So basically first element, because it stores the address of A, it goes to the value of A, which is 10. पहले 10 print होता, then will print 20, then will print 30.
the first element points to A, the second element points to B, and the third element points to C. Let me execute this and show you क्या result आ रहा. Yeah, it prints out first element जो pointer है, it prints out the value of A, which is 10, then prints out the value of B, which is 20, and prints the value of C, which is 30. Are we clear with the array of pointers? Basically, we store pointers in an array. Like, okay, can we have array of double pointers? Also, are there triple pointers? Like a pointer that points to a pointer that points to a pointer. Yeah, that is possible, but आप लोग के syllabus में नहीं है वो. That's possible. वो C language में possible है. A triple pointer. You just need to do this. Pointer to pointer कहाँ गया? यहाँ पर. You just need to do this. int स्टार 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 खत्म. आप 100 टाइम्स भी कर सकते हैं, करते जा सकते. नो वरीज. एंड एक्चुअली प्रिंट करके देखेंगे अपन. P4 प्रिंट एफ. Oh wait. Yes. Pointer to pointer. Yes. Let's execute this. पूरे सेम वैल्यू प्रिंट कर दे क्योंकि ऑल आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस 50. अगर मैं ये फोर्थ वाले में से एक निकाल दिया स्टार, देन उन्हें एक लेवल कम हो जाता, तो इट विल एक्चुअली प्रिंट द वैल्यू ऑफ P1. यहाँ पर गार्बेज वाली थ्रो कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है. या वो जितने कर सकते उतने पॉसिबल है, 100 भी हो सकते. आर वी गुड विद क्या बोलते हैं, लेटेस्ट टॉपिक क्या था अपना? अरे ऑफ पॉइंटर्स. आर वी गुड विद अरे ऑफ पॉइंटर्स? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? प्रोसीड. ओके. सो now we are completed with pointers. इतना ही था. कुछ डाउट्स है तो पूछो. लाइक थोड़ा सोचो, करो. इफ यू हैव बीन फॉलोइंग अलोंग, थोड़ा बहुत कोड लिख रहे थे तो जस्ट राइट डाउन थिंग्स एंड थिंक, एंड उसके बाद क्वेश्चन है तो पूछो. आई विल वेट फॉर अ मिनट. Yeah, I think no one has any doubts. We'll move on with strings. Strings बहुत easy है, लाइट है बहुत, कुछ मसला ही नहीं है उसका. Strings in C is just a sequence of characters. Strings basically, I think you have got an idea of strings by now, तो उतना समझाने की जरूरत नहीं है. बट बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या रहता, इन मतलब when you actually check by performing operations on strings, you will get to know that strings is not a solid word. It actually represents array of characters. Characters मतलब A, B, C, individual characters. तो strings represents array of characters. And उन्हें क्या बोलते, so how do I say this? Stored in a character array. जब स्ट्रिंग एंड हो रही कोई,
लाइक फॉर एग्जाम्पल एक नेम है, लेट्स से टर्मिनेटर, उसको मालूम कैसा होता कि ये स्ट्रिंग एंड हो रही, क्योंकि it can also assume that this space is also part of a string. For example, ये एक null terminator एक पूरा string है. How do the compiler know कि ये एक particular string है? Then we have another string. Let's say मेरा नाम लिखेंगे code. Okay, wait, CodeCraft. ओके, एग्जाम्पल के साथ ही समझा दो कोड में. तो बेसिकली इतना समझो कि जब एक स्ट्रिंग एंड हो रही, तो कंपाइलर व्हाट कंपाइलर डज इज इट एड्स अ टर्मिनेटर, नल टर्मिनेटर एट द वेरी एंड. तो कंपाइलर को मालूम होता हाँ यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो रही, बल्कि दिस नल टर्मिनेटर marks the end of the string, automatically added when using string literals. और ये एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे अपन. And we can also access the characters of a string just like elements of normal array, like square brackets में index number डाल के access कर सकते हैं ना values को arrays के. We can also access the characters of a string by using the same concept, like array, square brackets, index number. We can access the characters in a string. Let's go to the example. When I said key string is an array of characters. So that's the reason we are initializing this variable string with the character type, and also initializing with square brackets so that the compiler knows that this is an array of characters. And मैं और एक चीज बोला कि जब आप ऐसे स्ट्रिंग लिटरल्स यूज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब ये डबल कोट है ना, उसको स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं. तो जब आप ये यूज करते, द कंपाइलर automatically adds this terminator, null terminator at the very end. null terminator add हो रहा नहीं हो रहा मैं बतला दूं, वेट. यहाँ पर बेसिकली अपन स्टोर कर रहे, वेट, विल print the string first, and as this is an array, we can also access particular characters of that array, which is a string. And जब आप name index 0 access करते, it gives you the first letter, which is a. तो अपन जब execute करें, first string print हो रहा, then we get the value of the first element in the character array, which is a. Now ऐसे इसका साइज देखेंगे अब, प्रिंट साइज. इसका साइज देखेंगे, इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5. इसका साइज 5 है ना, 5 प्रिंट करना ना इसने, बट इट डज नॉट, इट प्रिंट्स 6. क्यों? क्योंकि ये एक नल टर्मिनेटर ऐड हो रहा है लास्ट में. वी कांट सी दैट, but compiler adds null terminator by itself automatically when we initialize a character array with these double quotes, which are also known as string literals. तो अपन लास्ट एलिमेंट प्रिंट करके देखेंगे, इज द लास्ट एलिमेंट null terminator or not. या यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है. 0 points to first, 1 points to 2, the second element, then 2 points to the first element, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता ना. then at last 4 points to the last element
लास्ट एलिमेंट विच इज ई। जब अपन प्रिंट करेंगे तो ई प्रिंट हो रहा ना, देन अगर 5 प्रिंट करे, अरे ऑफ अरे एलिमेंट 5 प्रिंट करे, तो इट विल एक्चुअली गिव अस द नल टर्मिनेटर। यहाँ पर जीरो, मतलब नल टर्मिनेटर जीरो, और बेसिकली जीरो ही है, तो it prints 0, which is the null terminator added by the compiler automatically when you use string literals by when initializing a character array. Is that clear? Can you use pointers with strings? मतलब pointers that points to strings, right? हाँ, wait. Let's say this is let's say code craft, ठीक है? And this is a character. We initialize with character type and say this as क्या बोलते, या एक्सेशन इनिशियलाइज करेंगे। द डिफरेंस इज, जब आप कोई पॉइंटर को सॉरी जब आप कोई वेट, लेट मी थिंक, ओके, जब आप कोई पॉइंटर को इनिशियलाइज करते, द टाइप ऑफ दैट पॉइंटर शुड बी द सेम टू विच इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स। अब ये पॉइंटर एक्स को पॉइंट कर रहा है ना, एक्स का टाइप क्या है, कैरेक्टर है, and the pointer should also be type of character। अगर ये int रहा, यहाँ int रहा, तो ये भी पॉइंटर का टाइप int रहना। अगर ये ओरिजिनल वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर है, तो पॉइंटर का टाइप भी कैरेक्टर रहना। एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस, वेट, गार्बेज वैल्यू आ रही, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में s लिखना, फॉर्मेट स्पेसिफायर d प्रिंट्स इंटीजर्स, या या see, because the pointer is pointing towards a character variable, it prints out. Let me also print with using asterisk p. Yeah, first element print कर रहा खाली ने s. Exception as a cut. Wait just a minute. Screen stuck हो गया. Just a minute. Oh, वो stuck हो गया terminal. Okay, समझ गया मैं. इसमें लेट्स टेक दिस एज जस्ट नॉर्मल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लेंगे. ओके, व्हेन यू प्रिंट दिस, वो कैरेक्टर, वो x की वैल्यू c है, x का एड्रेस ये है, देन p storing the address of x, and when you reference asterisk p, it does reference the original variable which is character x, and it prints out its value which stores c. कैरेक्टर्स को भी पॉइंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी पॉइंट कर सकते हैं. strings to functions, strings to functions. Wait,
ओके, समझ गया मैं। पॉइंटर्स एंड फंक्शंस किधर है, या सो यू वांट मी टू एक्सप्लेन by initializing this int variable as string and passing it to the function, right? Okay. पहले इसको नेम कोडक्राफ्ट नेम एस will actually take पहले कैरेक्टर्स, खाली कैरेक्टर्स करके लिखेंगे क्योंकि we don't have any much time. Okay, let me just do it. Array of array and pointers किधर है? Let me just change this to array. Okay, yeah. This is what you were saying, strings to function. तो यहाँ पर string है एक, जो एक array है. मैं यहाँ पर आप लोग को समझाया था कि जब when you use array, उन्हें that array is passes, sorry, that array is passed by reference. Value pass नहीं हो रही, value copy नहीं हो रही. Array is passed by reference. The same thing happens here. Because a string is an array of characters, उन्हें reference से pass होता. And when you do any operation outside a function, it changes the original variable. It changes the original string. यहाँ पर क्या change कर सकते हैं अपन? Let's change um, let me first print. Okay, change भी कर देंगे साथ ही साथ. Just a minute. Garbage values आ रहे मेरे को. Okay. 2 minutes. ओके, तो मैं बेसिकली अगेन यहाँ पर कैरेक्टर इनिशियलाइज कर रहा हूँ जो एक स्ट्रिंग है. देन प्रिंटिंग इट सो दैट वी कैन चेक बिफोर एंड आफ्टर. पहले कोड क्राफ्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे कोड क्राफ्ट प्रिंट हो जाता. देन आई एम कॉलिंग द फंक्शन चेंज वैल्यू. ठीक है, चेंज वैल्यू में क्या करूँ मैं? बिकॉज दिस इज एन एरे, व्हेन आई पास दिस एरे विच इज द स्ट्रिंग एरे, इट इज पास्ड बाय रेफरेंस. मतलब ये एक्चुअली इक्वल्स टू एन पर्सन नेम, मगर उन्हें रेफरेंस ही पास हो रहा, तो इसका एड्रेस डायरेक्टली स्टोर हो रहा किसमें? ये कैरेक्टर वेरिएबल में. कैरेक्टर वेरिएबल स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे. मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज एन एरे एंड इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सी. मतलब जब आप नेम पास कर रहे हैं, इसका किसका एड्रेस जाता? एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट, and that address is being stored in this variable, in this pointer variable. and जब आप एक्सेस करते using a for loop, पहले तो i 0 है,
we just access asterisk ARR which points to the first element की value and first element की value को अपन a से initialize कर दे रहे, एक character से initialize कर दे रहे, then this first element changes to this character. उसके बाद for loop आगे जाते रहता +1 as I said क्योंकि हर element of array is stored in a contiguous manner, एक के बाद एक ही store होता, तो when you do +1 you actually keep getting to other elements in the array and keep changing the each element with character a, and when you execute this, पहले तो original variable CodeCraft था, but after when I passed it to a function, each element of that string character array changed to this a, हर एक एलिमेंट चेंज हो गया उसमें. समझ नहीं आया? ओके, मूविंग ऑन टू स्ट्रिंग्स इजी है, कुछ भी मसला नहीं है उसमें. अगेन स्ट्रिंग्स आर जस्ट अरे ऑफ कैरेक्टर्स. ये एक एलिमेंट है कैरेक्टर अरे का, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है. स्ट्रिंग इज जस्ट अरे ऑफ कैरेक्टर्स. इसमें हर एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट है अरे का. Moving on to the next topic, character array versus C string. Yeah, यहाँ पर character array means अपन नॉर्मली अरे को इनिशियलाइज करके वी आर असाइनिंग ईच एलिमेंट विथ ईच कैरेक्टर. यहाँ पर नॉर्मल अपन जैसा इंट अरे बनाते ना, वैसे ही यहाँ पर कैरेक्टर अरे बना रहे, बट स्ट्रिंग इटसेल्फ इज अरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है बोले तो मैं लास्ट एग्जांपल में समझाया कि जब आप ऐसा स्ट्रिंग लिटरल्स यूज कर रहे, मतलब ऐसा डबल कोट्स यूज कर रहे, तो इट ऑटोमेटिकली एड्स अ नल टर्मिनेटर एट द वेरी एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग. ठीक है, बट आप जब नॉर्मली अरे इनिशियलाइज कर रहे विद इन दिस वे, जैसा इंटीजर्स को भी इनिशियलाइज करते, ये नल टर्मिनेटर ऐड नहीं होता. तो ये बेसिकली इट्स नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग. बट आप जब स्ट्रिंग लिटरल्स ये डबल कोट्स यूज करके स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते विद अरे ऑफ कैरेक्टर अरे, इन्हें एक नल टर्मिनेटर ऐड करता लास्ट में इन दिस वे. ऐसा लास्ट में कंपाइलर क्या करता एट द वेरी एंड, उन्हें ऐसा नल टर्मिनेटर ऐड करता. तो कंपाइलर जब परफॉर्म करता ऑपरेशन ये स्ट्रिंग पे, इट नोस वेयर द स्ट्रिंग एंड्स. जब ये हिट होता नल का टर्मिनेटर, जब स्ट्रिंग एंड होता. बट इन दिस केस there is no null terminator added. It's a normal array. It's a normal array. So no null terminator is added. Thus, it is not considered as string by the compiler. ये सिर्फ array of characters है. It can be ऐसा ऐसा कर ले सकते सिर्फ 1 0 int array 6 int array 2, let's say 2 6 5, yeah 1 2 3 4 5. ये और ये जो फर्स्ट और सेकंड अरे है, इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये कैरेक्टर टाइप है, ये इन टाइप है, उतना ही. बट हियर ये भी एक कैरेक्टर अरे है, बट द थिंग इज द कंपाइलर अंडरस्टैंड्स दिस कि ये एक स्ट्रिंग है. क्यों की एक नल टर्मिनेटर ऐड हो जा रहा एट द वेरी लास्ट
Why is the null terminator added? Because you are using these double quotes. These are known as string literals. Okay, let's execute this. Yeah, पहले we are printing out this this array 3 which is string hello. Null terminator अपन लास्ट एलिमेंट वो चेक कर रहे, मैं प्रीवियस एग्जांपल में भी बोला था, वेरी लास्ट एलिमेंट जीरो अरे ऑफ 4 रहता. व्हेन यू डू दिस एज 4, वेट अ मिनट. ओके, यहाँ पर आई शुड डू सी, एंड व्हेन यू डू दिस तो वो प्रिंट हो रहा. ओके, ओ जीरो एक सिमिलर दिखेंगे. टू अरे ऑफ टू, अरे 3 का सेकंड एलिमेंट which is L will be printed out, and when you do 4, O will be printed out, very last element. But because it also add string वो null terminator at the very last, when you use string literals, this double quotes, very last element will be 0 के बाद, so O के बाद it will be 6 नहीं, wait, यहाँ पर और इंटीजर है इसलिए वी हैव टू यूज परसेंटेज डी. तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो रहा. 0 इज अ नल टर्मिनेटर. एंड ऑल्सो अरे ऑफ size of array, this second array 3 will be 6. 5 नहीं रहता. क्यों? This null terminator is also being added here, so it becomes 6. Are we clear with that? Have to change the size. No, we are not initializing the size here. Size initialize कब करते, जब यू आर असाइन, वो क्या बोलते, जब यू आर असाइनिंग एन अरे, सॉरी, इनिशियलाइजिंग एन अरे नॉर्मली, जैसा इंट अरे 2, अरे 2 5 is equals to 1 2 3 4 5. But when you use these string literals to assign, to initialize array character, तो उन्हें खुद ब खुद ही साइज वो कर लेता, एडजस्ट कर लेता. If we are using strings in for loops for x, we would need the actual size instead of bytes, right? If we are using strings in for loop, for example, yes, we would need the actual size instead of bytes, right? अपने को साइज की जरूरत नहीं रहती. क्यों? वेट, लेट मी थिंक, क्वेश्चन समझने दो मेरे को. या हाँ, साइज मालूम कर ले सकते हैं. वी कैन गेट द साइज. यहाँ पर अपन साइज ऑफ अरे करें तो it will just get us the size of the array, which is 6, because null terminator भी add हो रहा. But if we wanna pass क्या बोलते, just the hello thing, तो अपन सिर्फ ऐसा पास कर सकते -1 करके. तो it will print 5 string literals यूज कर रहे हैं जब. Okay, only 2 topics are left. We'll wrap it up in just 10 to 15 minutes. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
कैरेक्टर अरे वर्सेस सी स्ट्रिंग तो हो गया। कैरेक्टर अरे और सी स्ट्रिंग में क्या फर्क है? सी स्ट्रिंग में सिर्फ आप स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करते। कैरेक्टर अरे सिर्फ नॉर्मली जैसा इंटीजर अरे इनिशियलाइज करते वैसा इनिशियलाइज करते कैरेक्टर अरे को भी। की ऑल सी स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर। Okay, string inputs and output functions. Uh, Acha, let me know if I'm audible. Just give me a thumbs up. Okay. Good, good, good. String input output functions. Okay. String input output functions basic है. इनपुट कैसा लेते आउटपुट कैसा देते। आइडियली अपन इनपुट आउटपुट कैसा देते। वी टेक इनपुट यूजिंग स्कैनफ एंड आउटपुट यूजिंग प्रिंटफ। यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे। We are getting some array of characters, that is strings, from the user. And when I type here code craft, code पहले code type करेंगे। Okay, it prints out code और line भी नहीं है सीधी। इन्हें that that is the main difference that I'll be explaining about put. Put is another way of outputting strings. So that's one of the features that it provides is it prints in the next line. We'll look into that in just a minute. So for scanf basically input ले रहा and printer उसको print कर रहा and it does not print in the next line. New line में print नहीं कर रहा, वही line में print कर दे रहा। And for example, if I want to input code craft, let's execute this again. I want to enter code craft. It does not print craft as you can observe here. यहाँ पर उन्हें सिर्फ कोड प्रिंट कर रहा, क्राफ्ट प्रिंट नहीं कर रहा। एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि यहाँ पर वाइट स्पेस है। सो बेसिकली स्कैनर क्या करता है, जब जहाँ भी वाइट स्पेस इट इट जहाँ भी वाइट स्पेस डिटेक्ट करता है इट स्टॉप्स देयर। उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करता, सिर्फ वहाँ वाइट स्पेस के पास स्टॉप करके जो भी इनपुट है वो ले लेता स्कैनर। And what's the way around to overcome scanf is using fgets. Fgets क्या करता? It also considers byte spaces and it will allow you only to enter the value of size that you initialized in the beginning. मतलब 50 characters तक ही आप input दे सकते। Whereas it's not the case with the scanf. As far as you do not include white spaces, you can enter as many characters, as many numbers as possible. Okay, पहले ये करके देखेंगे अपन। scanf से ही रन करके देखेंगे। इतने भी डाल सकते। जी 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 जी। This must be more than 50, right? Okay, इन्हें भी नहीं दे रहा। Stack smashing detected. Okay, even scanf does not allow you to enter a value that is more than the value that was initialized in the beginning. It cannot store a value more than the size which was initialized in the beginning. Scanf भी scanf also does that. But how fgets differentiates itself is it also considers white spaces. Code craft. See, as you can see here, यहाँ पर कोड क्राफ्ट पूरा प्रिंट हो रहा, उन्हें व्हाइट स्पेस को भी कंसीडर कर रहा। So this is the only differentiator between scanf and fgets. And another string method that we'll be looking into is puts. What puts does is it prints the value in new line. तो यहाँ पर
using printf. Okay, wait, we'll also say this. दोनों से प्रिंट करके देखेंगे. The only thing that differentiates puts from printf is it prints the put method prints the value in the next line. Code craft. See, यहाँ पर अपन प्रिंट करें, उन्हें एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया. बट व्हेन यू यूज puts, it prints in the next line. आपको ऐसा ये यूज करने की जरूरत नहीं रहती, बैक स्लैश एंड यूज करने की जरूरत नहीं रहती फॉर न्यू लाइन. You can just use puts and it will print out in the next line. For example, यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट डालेंगे and let's see if it prints out the result in the next line. CodeCraft. Wait. What more methods we have for? Okay, reads the word, stops at white space. Scanf का ये एक वो रहता for drawback. App gets safe method reads full line with size limits. Prints a string, no automatic new line. Puts में क्या होता? Prints string with new line added. तो I think ऐसा होता है ये. Wait, कहाँ हो गया? Code craft. या जब आप पुट यूज करते उन्हें एक नेक्स्ट लाइन ऐड करता उसके बाद. यहाँ पे एज यू कैन सी ये कोड क्राफ्ट प्रिंट होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन बाद में ऐड हो रही. whereas it's not the same case with print. उन्हें जब प्रिंट करता this no new line added. craft this no new line added. continuously वो हो जाता, दूसरा टेक्स्ट आ जाता. यहाँ पे there is no new line added after print. array of strings हो गया ना. Yeah. How much time we are left with? Okay, we'll look into C string library. String libraries. These are libraries that perform operations on strings. बहुत easy है ये. जल्दी जल्दी कर लेंगे. 5 minutes. We are left only with 5 minutes. So we have a string code. We have another string craft. The first method we'll be looking at is a string lower strlwr and passing it the variable string1. And when you pass the string, what it does is it converts a string to lowercase. All the characters will be lowercase. Let me assign each character of this string as capital characters. Wait, okay, because each character is already sorry, let me assign each character as small characters. No, wait, code. Okay, just a minute. About implicit declaration function, did you mean? Just a minute, guys.
Wait. I don't know why this is happening. We'll look into some other if they are working or not. Okay, I'm facing some issues. बेसिकली समझा दे तो मैं यहाँ पर रन हो रही है तो when we use str lwr and in brackets if we pass the string it converts that string to lowercase and the second method which is strupr stands for string upper that converts the string to uppercase and the third one is wait I'll explain all here. Okay, so the string lower convert the string to lowercase, string upper convert the string to uppercase, string cat. What is string cat? It concatenates. It appends string to end of string one. मतलब इन्हें कैसा प्रिंट होता है ये ऐसा प्रिंट होता कोड क्राफ्ट अपेंड हो जाता क्राफ्ट इज स्ट्रिंग टू एंड इट इज अपेंडेड टू स्ट्रिंग वन ऐसा आउटपुट आता बिकॉज आई एम फेसिंग सम एरर्स ये जरा रन है और अभी इसलिए ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ the fourth one is strncat which says that take this element मतलब यहाँ पर एलिमेंट क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर रही है थर्ड पैरामीटर में अपन टेक दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग टू एंड concatenate with string one मतलब append and characters from string 2 to string 1 यहाँ पर अपन लेट्स से टू कैरेक्टर्स अपेंड कर रहे तो इट विल आउटपुट code cr because we are just saying to append two characters it just append two characters from string 2 which is cr to string 1 which is code. Okay, this was the fourth method and coming to the fifth method which is strcpy which stands for string copy. It basically copies second element to second string to the first string. तो जब आप ये प्रिंट करते स्ट्रिंग वन प्रिंट करते इट विल गिव यू क्राफ्ट नॉट कोड क्योंकि स्ट्रिंग टू जो क्राफ्ट है वो स्ट्रिंग वन में अपेंड कॉपी हो गया string one is now craft string 2 में craft था it was copied to string 1 now when you print string 1 you'll get craft not code उसके बाद we have last method string and cpy which says that इतने कैरेक्टर्स यहाँ पर ये लास्ट पैरामीटर कैरेक्टर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है टेक दिस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग 2 एंड कॉपी दैट टू स्ट्रिंग 1 मतलब पूरा स्ट्रिंग 1 रिप्लेस नहीं हो रहा सिर्फ फोर कैरेक्टर्स ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग 1 में फोर ही कैरेक्टर्स है ना लेट्स से जस्ट कॉपी टू कैरेक्टर्स फ्रॉम स्ट्रिंग 2 मतलब सी और आर will be copied to first two character of string 1 and the output will be wait जब आप string 1 print करेंगे the output will be not code but crde because these two are first two characters of string 2 which was copied and replaced by first two characters of string 1. Was that clear?
No, it changed the actual variable itself. It's not temporary. It changes the actual variable itself. यहाँ पर प्रिंट कर रहा था मैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग वन, बट वहाँ थोड़ा एरर्स आ रहे मेरे को, इसलिए आई वाजंट एबल टू प्रिंट इट आउट. तो बेसिकली जब प्रिंट करते, दिस आर द आउटपुट्स दैट यू विल गेट. यहाँ पर ये लोअर यूज करे तो स्ट्रिंग वन ये प्रिंट होता, अपर करे तो ये प्रिंट होता. देन ये थर्ड मेथड यूज करे विथ स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू, ये प्रिंट होता, मतलब स्ट्रिंग वन ये प्रिंट होता. Then using this method by passing string 1, string 2 and parameter 2, इन्हें concatenate करके string 1 print करता सीधा. This is concatenated into string 1. तो string 1 क्या print होता, कोड CR. फिर यहाँ पर कॉपी string 2 string 1 में हो डाल के string 1 will be printed as craft. उसके बाद in here we are also passing another parameter with number of characters. तो यहाँ पर string 1 क्या print होके आता, CRDE. वर्क ऑन एवरी कंपाइलर आई गेस. हाँ वो रन नहीं हो रहा क्योंकि आई डोंट नो, बेसिकली यही रहता. यहाँ पर आउटपुट्स ऐसे ही रहते, ये जो प्रिंट करो ना मैं स्ट्रिंग वन, ये आउटपुट्स प्रिंट होके आते, दैट आई राइट रिटन डाउन aside of each method. Yeah, that was the end of session. I think we won't be able to cover sorting today. अगर हो सका तो विल एक्सटेंड वन मोर डे टू कवर most important questions that will be most probably coming into your exams, and also will be looking into previous year questions. Yeah, if possible, we'll also extend this PPS one more day to cover up last year questions and to prepare you for exams. Any questions? Any questions related to topics that were explained today? No worries, no worries. If you have any queries and questions, do ask, or else the session is ended. You can leave